नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? अभी कुछ ही मिनट पहले 10-12 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आया कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के फास्ट बॉलर बीसीसीआई सोर्सेज के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हैं। बहुत बहुत बड़ी खबर। फ़ोन पे इतने मैसेज आए, मुझे कॉल आए 2 लोग के, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बजने लगे। मैंने सोशल मीडिया चेक किया, मैंने कुछ सूत्रों को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक और जर्नलिस्ट से बात करी, उन्होंने कहा हाँ, लग रहा है क्योंकि ये वो जर्नलिस्ट हैं जो कल त्रिवेंद्रम में थे जहाँ पे मैच खेला गया। लेकिन यहाँ पे खास इसी चैनल पे लाइव जो व्यूअर्स, जो दर्शक, जो क्रिकेट प्रेमी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ ही मिनट पहले, मतलब 8-9 मिनट पहले, इस लाइव से जुड़ने से पहले मैंने एक बहुत क्लोज एक सोर्स, एक जो इंसान है जसप्रीत बुमराह के आसपास वो रहते हैं काफी समय तक। अभी वो एनसीए में है, यानी कि बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में है। खबर अभी कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों, मैं आपको यहाँ लाइव बता सकता हूँ कि खबर अभी कंफर्म नहीं है कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर हैं। यहाँ पे भी एक फ़ोन आ रहा है मेरा, मैं फ़ोन नहीं ले पाऊँगा बिकॉज़ मैं अभी अभी लाइव पे हूँ। पर बहुत-बहुत बड़ी खबर है कि फ़िलहाल जो खबर है कि बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर है, वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। हो सके खबर सही है, लेकिन फ़िलहाल जसप्रीत बुमराह बैंगलोर के एनसीए में हैं, जहाँ पे उनकी मेडिकल टेस्ट, उनकी फिज़िकल टेस्ट हो रही है। उसके रिपोर्ट्स अगले 20 से 25 मिनट में आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यहाँ पे इसी चैनल पे। जो भी खबर आता है, जैसे कि फ़ोन आएगा, हो सके मैं इस लाइव में ही मैं कॉल लूँ, बट अभी तक हम वेट कर रहे हैं कन्फर्मेशन। तो जो आप सुन रहे हैं खबर, हो सके वो खबर सही है, लेकिन फिलहाल इट इज नॉट कंफर्म। दिस इज कमिंग स्ट्रेट टू यू ऑन दिस चैनल, और यू हियर फॉर द क्रिकेट। मैं हूं आपका साथी जेमी ऑल्टर। खबर है कि अभी तक फिलहाल बुमराह रूल्ड आउट नहीं हो चुके हैं। अगले 20 से 25 मिनट तक रिपोर्ट आएगी और फिर रिपोर्ट को बीसीसीआई उसकी जांच करेगी, तभी दोस्तों खबर आएगी कि वो जा रहे हैं या नहीं। लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बुमराह कुछ 2 ढाई महीने के बाद टीम में वापस आए थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में वो पहले टी20 मैच नहीं खेले और फिर कल जो त्रिवेंद्रम में पहला टी20 हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो नहीं खेले। और मैं बता सकता हूं 100% सही खबर है ये कि कल बुमराह त्रिवेंद्रम में नहीं थे, वो बैंगलोर में थे, क्योंकि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है उसकी दिक्कत उन्हें हो रही है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जसप्रीत बुमराह ना जाए, मतलब जा पाए वर्ल्ड कप, और ये खबर जो है इतनी सीरियस नहीं हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक काफी गंभीर है ये मामला, सर्जरी शायद उन्हें करनी पड़ेगी। बट दोबारा मैं कहूंगा आपके लिए इस चैनल पे, द न्यूज इज नॉट कंफर्म येट। आई हैव बीन इन टच विद समवन एट द एनसीए राइट नाउ, जहां पे जसप्रीत बुमराह इस वक्त हैं। कमेंट्स आ रहे हैं, सुबोध सुबह चौहान कह रहे हैं, आई थिंक दीपक चहर should replace Bumrah because he provides that power hitting at number 8 and will be concerned. Absolutely. Deepak Chahar is already in the World Cup reserves. He bowled fantastically yesterday in that first ODI on that spicy track. You can see my match review, my match reaction on this channel. For me, it's a no-brainer. Chahar moves into the from the reserve pool into the main pool अगर बुमराह वाकई में इंजर्ड है। कुणाल शाह कह रहे हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्वीटेड मैन इट्स एज गुड एज कंफर्म। बिल्कुल, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, but I said I've spoken to someone who's actually at the NCA, whereas the other people have perhaps not done that. We hope it's not true, but signs are yes. This is a fairly serious injury. BCI wants to be precautionary about it. जुहैब कमल पूछ रहे, हु वुड यू वांट टू रिप्लेस बुमराह? जैसे कि सुबोध ने कहा था, जैसे कि मैंने उनकी बातों को मैंने बैक किया, बिल्कुल आई वुड से दीपक चाहर। स्पोर्ट्स टॉक गली से कपिल वर्मा है। हाय कपिल वर्मा, I think Mohammad Shami replaced him. Okay, that's true. I mean, Shami is should recover from COVID. Shami was already in the reserve, but between them, I would take Chahar. I think Chahar is a younger bowler. He can bat. Shami is a bit of a liability with the bat and in the field. And also, I said before, मेरे हिसाब से Shami एक natural T20 bowler नहीं है, but वो बहुत experience है, बहुत अनुभवी bowler है वो. So it's going to be between Chahar and Shami. Probably Shami's not played for a while. In fact, he's not played a T20I for almost a year. Whereas Chahar has bowled fantastically yesterday. So between Shami and Chahar, मैं चुनूंगा Chahar को। Zuhaib Kamal पूछ रहे हैं, can we get Siraj? I don't think Siraj is a natural fit in T20s. I think Chahar is a much better option. I would even still go for Shami over Siraj. शामी स्टैंड बाय पे हैं, अब वो 15 आ गए हैं, सिराज स्टैंड बाय को रिजर्व रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल समीर कुमार, हो सके कि सिराज को लें, बट आई वुड नॉट पिक उमेश एंड आई वुड पिक चहर ओवर एनीबॉडी एल्स। सुबोध पूछ रहे हैं, जेमी सर हाउ इम्प्रेस्ड विद यू सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव इज I said this in my this morning's video. I said in the last video, whenever we talk about Surya Kumar Yadav, he is the number 2 ranked batsman. He's the leading run getter in T20Is दोस्तों इस
साल 700 कुछ 32 रन है उनका, स्ट्राइक रेट देखिए 180 के आसपास। ही इज, फॉर मी, ही इज द बेस्ट T20 बैट्समैन गोइंग अराउंड राइट नाउ। वेरी 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 इम्प्रेस्ड। शिखर सिंह पूछते हैं उमरान मलिक का कोई आउटसाइड चांस हो सकता है? युवा खिलाड़ी हैं, फिट हैं, रोबस्ट हैं, तेज हैं, बट आई थिंक द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजर आर अ बिट वेरी कि क्या वो अभी इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हैं। सो आई डोंट थिंक ही शुड कम इन, बट इफ यू वांट पेस ऑन दोस बाउंसी विकेट्स, ही इज योर बेस्ट ऑप्शन इफ यू वांट पेस। समीर कुमार बुमराह 50 ओवर जी, मैंने पूछा था इस सोर्स से, इस खबरी से, उन्होंने कहा इतना सीरियस नहीं है कि वहां तक, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी तक 11-12 बल्कि 12 महीने अभी हैं उस वर्ल्ड कप में। ही विल बी फाइन इन कपल मंथ्स। It's just the case that they don't think surgery is required yet. They just want to be very cautious and be safe. That's why he's probably not going to the World Cup. Arpan Sahu keh rahe hain, bilkul, it is a huge blow before the World Cup. Sports Talk Gully, tell your Twitter ID, alter underscore Jamie. Alter, ALTER underscore JAMIE. Kunal Shah, why are Devdutt Padikkar and Dhruvaj Gaikwad not on the scene? Also, what's up with Shaw? I think Shaw has set himself so far back because of indiscipline and some poor scores, but he's definitely in the top 20 batsmen, I think. Padikkar and Gaikwad, I mean, Gaikwad was there, Padikkar was there, but this team is so hell bent on playing KL Rahul, Rohit Sharma, Virat Kohli as their top three. As long as players of this caliber, of this status are around, क्योंकि ये status शब्द जो है दोस्तों, it gets so much more meaning in Indian cricket or in Asian cricket than actual talent does. I think Devdutt Padikkal ka time zarur aayega. I think he's 22 or something. His time will come. Gaikwad, I mean, he's had a fantastic last year in white ball cricket. You know, he got 100 recently. So I think he's around. But when you have Rohit Sharma, Virat Kohli, and KL Rahul, very tough for these guys to break in. Though I say this again, मैं दोबारा ये कहूँगा, T20 is a young man's game, and I would like to see more young players there. But इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं टीम को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरी राय कौन मानेगा? आशुतोष भोई पूछ रहे हैं अर्शदीप एंड भूवी दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये कॉल मुझे 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 लेना पड़ेगा। हाय हाय हाय, आई एम ऑन अ लाइव। नहीं नहीं, गो अहेड। वी शुड यस यस, जस्ट आई कैन, बिल्कुल, श्योर, अंडरस्टूड, या, एज सून एज, करेक्ट, as soon as I get confirmation from the NCA whether he's there or not, जो भी है, I'll do that. Definitely. I got it. I will do that as soon as I get off this. Sure, sure. Done. Just give me 15 minutes, I'll do that for sure. Thank you. Okay, bye. देखिए, मैंने शो पे ही लाइव कॉल लिया बुमराह को ही लेके, क्योंकि मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मैं कुछ 2 हफ्ते पहले मैं बैंगलोर गया था, एनसीए के बाहर मैं उनसे मिला था। उस टाइम वो बड़े फिट लग रहे थे, बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे जसप्रीत बुमराह जब मैं उनसे मिला। आप जानते होंगे दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह डज़ नॉट गिव मेनी इंटरव्यूज़, सो आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी फॉर्च्यूनेट एंड आई से ब्लेस्ड, मेरा सौभाग्य था कि जसप्रीत बुमराह ने मेरे लिए समय निकाला, क्योंकि वो बहुत कम इंटरव्यूज़ देते हैं। आप ऑनलाइन जाइए तो आपको बहुत चंद आपको interview मिलेंगे जसप्रीत बुमराह के। So I met him 2 weeks ago. I put the picture out on my Facebook, on my Twitter, on my Instagram, and a lot of comments came पे, क्या बुमराह कैसे हैं जेमी भाई, क्या वो खेलेंगे? मैंने कहा हाँ जरूर खेलेंगे। मैंने कहा था कि शायद वो पहला वनडे ना खेलें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, and sure enough that happened. But like I'm still getting calls, I'm getting messages because people know that I'm in touch with someone who's right there with Bumrah right now. But again, let's hope that the news is not that serious. So yeah, जब मैं मिला बुमराह से, he was very positive, he was very upbeat. I don't think he was aware that this setback was going to come, क्योंकि एक bowler अपना body, अपना शरीर, अपना एक muscle को जानता है, but it was shocking news. So again, आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं, thank you. Let's hit some likes, let's get up to 100 people watching. I think we have only 6 likes. Come on, like ठोकिए, मैं आपको खबर देते रहूंगा जैसे ये आएगा यहाँ पे। Jamie sir, I'm a big fan of your journalism, unbiased opinion. Great, you are very, very kind. So both, thank you so much. Love you. Thank you. आशुतोष भोई कह रहे हैं अर्शदीप एंड भूवी विद दीपक और हर्षल, I'd still go for Chahar over Harshal. बिल्कुल. Costa Patak is saying T20 is a young man's sport. So for the next 2 World Cups, which will held in USA, West Indies, India should go for young and players with young captain. Absolutely, I think Hardik Pandya should be the captain. Yep.
What non-Indian team do you see as a serious contender for the World Cup? Thanks for answering question. Australia are my number one pick for the World Cup. Gaurav Shukla, I love you, bye. Thank you, Gaurav. Thank you. Love you too. Navjot Singh, I think last Test series we lost key players to injury and then won crucial matches. It might turn the same. Young people will replace, will be thought weak and underdogs. Also, I agree with whatever you said. Bilkul, bilkul, bilkul. Ankur Sen Gupta, although we won yesterday, don't you think we should go with six bowling options in every T20 game as a mandate? Absolutely, we should go. My preview yesterday was questioning, will five bowlers be enough? Now, on that kind of a track, which is a very un-Indian track, a very spicy track, Jampe, South Africa became 19 for 5. On that kind of a track, you could do the job with five bowlers. But I have maintained this. It's a risk to go into five bowlers. You need five bowlers plus Hardik Pandya as the sixth option. और हम ये देख चुके हैं दोस्तों कि whenever an all-rounder of Jadeja's caliber is not there, India's test team goes out of whack, goes out of sync. And now with Hardik Pandya not there in this series, we saw how the team dynamics changed. It worked yesterday because that spice, that track was spicy. You're not going to get that kind of track again. I think more than the pace and the swing, it was the unpredictable nature of that track that forced so many South African batsmen to play those shots. I think barring Babuma and barring Miller, who got good balls, De Kock, Riley Russo, Tristan Stubbs, they didn't get any great balls. They were just so unsure. De Kock hanging his bat out, Tristan Stubbs slapping the ball to deep cover, deep point. And Russo just poked at the ball. His foot didn't move. So as good as Chahar and Arshdeep were yesterday, as much swing and seam there was, it was 3 wickets were down to just uh, insecure shots. So definitely, I would back these bowlers, but you need six bowlers. Bilkul. So both Prasid Krishna and Mohsin Khan should replace Bumrah. Look, I think you have Chahar there already. I think he's the ideal candidate. Maybe you bring a Prasid or a Avesh or a Mohsin or a Umran into the reserves and see how it goes. But right now, pick someone who's already in the team setup right now. शमी को 15 में लेना चाहिए था नहीं गौरव शुक्ला भाई मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ मेरे ख्याल से शमी T20 बॉलर नहीं है सुबोध चौहान why रोहित not scoring big runs in T20 cricket I don't know ये रोहित ही बता पाएंगे but आपने सही कहा वो बड़े रन नहीं बना रहे लेकिन अक्सर वो जो भी रन बना रहे 18 22 23 30 वो तेज गति से his strike rate has gone up so much and that's a good sign because आखिर T20 cricket is not about big scores. It's about how fast you can get your team off to a flyer in the power play. और आई वुड से 10 में से 8 बार रोहित शर्मा भले ही 20-25 रन ही मारे वो तेजी से रन मारते हैं और पावर प्ले में वो ही मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि दूसरी छोर पे केएल राहुल पता नहीं किस किस्म की T20 क्रिकेट खेल रहे हैं Ankur Sen Gupta, continuing on Subodh's question, Chahar and Bhuvi are similar bowlers. Do you think both can make an effective, both can together make the 11 effective? I think they could. I think Chahar's a bit quicker, but I think Chahar and Bhuvi have to be bowled out up front. Chahar maybe can come back for two, around the 14th, 15th, 16th block. Do not bring back Bhuvneshwar. If that means you only bowl him at 3 overs up front, I'm fine with that. Do not bowl Bhuvi at the death anymore. We've seen now for the last two series he's a big liability at the death, but that does not mean that Chahar movie cannot be in the same thing. Gaurav Singh, what was happened, sir? पता नहीं गौरव आप किस लिहाज से पूछ रहे हो समीर कुमार फर्स्ट बैटिंग करने चाहिए लास्ट मैच में फिर राउंड फिर होगा वर्ल्ड कप का पता नहीं बैटिंग कौन करता है कोई टीम बैटिंग नहीं करती आजकल वेरी 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 सरप्राइजिंग Jamie, will you be surprising us by traveling to Oz land and reporting? No, I'm not because my wife Meha is going for her channel. She'll be there for almost a month. That's why I have to stay back and run the house and be with our son. So मैं नहीं जा रहा हूँ. इस बार मेहा जा रही है ऑस्ट्रेलिया. मैं तो जा चुका हूँ already 3 World Cups. So I said it's good that Meha gets a chance to go. So she's going and she'll be bringing all the live news for you on this channel. So do stick around. Do subscribe. Hit some likes यार. 18 ही लोग देख रहे हैं क्या बात है इतने फॉलोअर्स हैं मेरे सिर्फ 19-20 लोग देख रहे हैं लाइक ठोकिए दोस्तों Costa Patak, do you think it's time for players like Shubman or Prithvi is better opener than KL Rahul? Bilkul. I think KL Rahul has got a long, long rope. He's, KL Rahul की बात करें कल मानता हूं कंडीशन टफ थे रबाडा नोकिया ने बड़ी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी बहुत प्रेशर लगाया था रोहित फेल हुए के विराट कोहली फेल हुए केएल राहुल हैड टू सी आउट दैट टफ टाइम बट माय पॉइंट इज अ प्लेयर हु हैज दैट बैकिंग उन्हें डर के क्यों खेलना चाहिए he was kind of playing as a kind of person who was playing for his place you are KL Rahul you have such natural talent you have the team's backing Rohit Sharma has said that you're going to play every match in the World Cup so play a bit freer play it just go for it I like Rahul but I think he's clogged in the head he's not he looks like he's playing to keep his place in the team which is not the case because he's got the team's backing so go and play your natural game Rahul you're a fantastic player
Navjot, ha, then time to go to Landower. Nahi, bhaiya, I have to do my glance shows 3 days a week. I have my chat show on glance called The Alternate View. I have those shows. I have shows. If I go to Missouri, there's no Wi-Fi, no network, so I'll be out of a job if I go to Landower for a month. I have to be here for my glance shows and for the shows here on this channel as well. समीर बुमराह को एक फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए भाई एक ही फॉर्मेट तो खेलते हैं वो ही इज नॉट ही स्टॉप प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4.5 years को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते वनडे कम खेलते हैं भुवनेश्वर वन T20 ही खेलते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है your thoughts on the most hot question ongoing, Pant or DK? Pant, if he's not in your top four, he doesn't fit into your team. DK has obviously been picked for the finisher's role. You can debate whether he's the man because he's 37, but he has success, he has experience on his side. I think, given the fact that the team has backed him for so long now, 6 months, let him go to the World Cup. Let him be your finisher. Pant's ka time. I got Pant is still a bit of a liability when it comes to T20 cricket. He's a good one-day player. He's a fantastic. He's an all-time great in Test. But Pant himself needs to figure out whether he can play T20s or not. सर आप शायद ही जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप शायद मुझे तो पहले से बहुत बहुत शक था अगर बुमराह जाते भी तो मुझे शक है कि ये टीम वर्ल्ड कप लायक है तो ये कड़वा सच है दोस्तों मैं पहले भी कह चुका हूँ the real Rahul showed up on the last ball to get his 50, but I think he will gain confidence from this knock. I hope so. I hope because he did get a 50. He saw the tough parts. He did his job. So let's see what happens. इंडिया को लेफ्ट हैंड बॉलर का कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी बहुत सही समीर कुमार हर्षदीप सिंह बेस्ट बॉलर गोइंग अराउंड द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट व्हेन इट कम्स टू बॉलर्स इज हर्षदीप सिंह इंडिया का बेस्ट डेथ बॉलर दिस ईयर चेक आउट द नंबर्स गौरव शुक्ला सूर्य को आप इस टाइम इंडिया का बेस्ट बैट्समैन इंडिया का अभी तो मैंने कहा था इसी शो पे वो पूरे विश्व के बेस्ट T20 बैट्समैन ही इज द नंबर 1 बैट्समैन इन दिस फॉर्मेट मोहम्मद रिजवान माइट बी रैंक नंबर 1 बट आई हैव नो डाउट सूर्य कुमार यादव इस साल के सबसे हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 फॉर्मेट में एक शतक 5 अर्धशतक बेस्ट स्ट्राइक रेट he leads the next main batsman by some 300 runs he's the best batsman going around in this format forget India भरत कोटवानी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आफ्टर गिविंग हिम सो मच रेस्टिंग टू हिम इज इंजर्ड बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं वेट कर रहा हूँ उस सोर्स का फोन का या मैसेज का उन्होंने कहा था मुझसे 20-25 मिनट पहले कि अभी बुमराह एनसीए में है ताजा खबर सिर्फ आपके लिए इस चैनल पे इसी लाइव पे मैं आपको दे चुका हूँ कि खबर अभी पक्की नहीं है कि वो जा रहे हैं दिस पर्सन हु इज विद बुमराह अ लॉट ऑफ द टाइम विल गिव मी द फाइनल अपडेट हो सके इसी लाइव के दौरान मुझे कॉल लेना पड़ा या मुझे मैसेज पढ़ना पड़े जिस पे लिखा है कि बुमराह is actually going or not going. Yes, जैसे कि पीटीआई ने रिपोर्ट किया जैसे कि टीवाई ने रिपोर्ट किया जैसे कि सूत्रों ने मुझे भी बताया था इट सीम्स इन ऑल प्रोबेबिलिटी दैट इज रूल्ड आउट पर अभी फाइनल कॉल नहीं लिया गया किसी के मुंह से न्यू रूल क्या है क्रिकेट में जो कौन सा रूल है भाई मुझे नहीं पता कोई नया रूल है कि हम तो यहाँ बुमराह की अपडेट के बारे में बात करने आए हैं आकाश सोनी व्लॉग्स फेमिलियर नेम कैसे हो भाई भूवी और हर्षल अगर अपनी अच्छी फॉर्म आ जाए तो भी इंडिया के 50% बन सकते हैं मैं तो कहता हूं कि भुवनेश्वर कुमार बहुत ही बल्कि शायद सबसे सफल बॉलर हमारे रहेंगे मानता हूं कि डेथ ओवर में काफी प्रॉब्लमेटिक है वो लेकिन इतने अनुभवी हैं एंड आई थिंक कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन उनकी लैक ऑफ पेस उन ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जरूर काम आएगी तो आपने यहां सुना इसी चैनल पर दोबारा कहूंगा मैं भुवनेश्वर कुमार शायद हमारे सबसे सफल बॉलर बने T20 वर्ल्ड कप हर्षदीप बिल्कुल शिखर सिंह ऑस्ट्रेलिया में पिचेस कैसी मिलेगी जय भाई ऑस्ट्रेलियन समरों को कभी स्टार्ट नहीं हुआ वही है पिचेस वहां पे बाउंस हमेशा होती है स्विंग सीम कम होती है अब बता दूं कि स्विंग क्या होता है स्विंग होती है दोस्तों हवा में सीम होती है ऑफ द पिच अक्सर कमेंटेटर बड़े बड़े दिग्गज कमेंटेटर जो ये गेम खेल चुके हैं जो 100 टेस्ट खेल चुके हैं ये सीम और स्विंग में अंतर नहीं बता सकते आप जैसे व्यूअर्स के लिए लाइव स्विंग इज थ्रू द एयर सीम इज ऑफ द पिच सीम पिच और जो बॉल करती है उसे कहते हैं सीम जो बॉल घूमती है हवा में उसे कहते हैं स्विंग कल हमने स्विंग और सीम बहुत देखा अर्शदीप की बॉल ने स्विंग करी ज्यादा और चाहर की बॉल ने सीम करी ये दोनों चीज अक्सर ऑस्ट्रेलिया में खासकर लाइट्स के अंदर T20 क्रिकेट में कम दिखती है लेकिन आपको वहां पे थोड़ी बाउंस मिलेगी which is why bowlers like Bumrah would have been fantastic which is why Chahar could be handy which is why Arshal which is why उमरान मलिक अगर वो होते हैं इस स्कोप में तो शायद वो वहां पे सफल होते हैं बट despite the conditions not being naturally suited to Bhuvneshwar's kind of bowling, I'm sticking my neck out and saying that Bhuvneshwar will have a very, very good World Cup. Ankur Sen Gupta, few verified reporters on Twitter not taking names have started announcing the news of Bumrah being ruled out. Yes, 99% he is ruled out, but
As soon as this name came, I made some calls. When the call was picked up, I was told कि Jamie भाई रुको अभी news confirm नहीं है. I'm with Bumrah at the NCA. He's being tested now. As soon as the reports come out, I will tell you first. तो मैं उसी SMS, उसी call, उसी WhatsApp का wait कर रहा हूँ. Yes, in all probability, he is gone. I'm not saying that I'm giving you, the exact accurate news. I'm talking to someone who's very very close to Bumrah और जो अभी Bangalore में है उनके साथ. So let's see what happens. Subodh कह रहे हैं I have feeling Surya might score century in coming two games versus South Africa. He's in red hot form. Absolutely, like I said, he's the best T20 batsman going around. So absolutely fantastic what's happening. कितने लोग जुड़े हैं दोस्तों इस स्ट्रीम से क्योंकि हाँ ये खबर आ रही है कि बुमराह is injured out of this. This is the thing. Again, this is PTI, and PTI is usually reliable. He's out of contention. Bumrah traveled to Bengaluru on Wednesday to undergo scan on his back, and the results are awaited. बिल्कुल ये खबर मैं आपको दे चुका हूँ. Exactly, the results are awaited. जैसे ही खबर आएगी इसी फोन पे मुझे कॉल आएगा, मुझे व्हाट्सएप आएगा. अगर मुझे इस लाइव के दौरान कॉल लेनी पड़े तो मैं लूंगा. But we are not exactly sure what is happening with him. Bharat Kotwani कह रहे हैं in this World Cup we'll see the best of Rohit. I hope so. He's got a good record in Australia. Mukul Bisoya पूछ रहे हैं do you think Siraj will be a good option? I don't. I just don't see him as a natural T20 bowler. But he's good in those conditions. Australia, yes. Manoj Adivarekar, do you think the yardstick for selection in T20 should be under 30 years? It's a tough question to answer, Manoj, because yes, it's a young man's game, but you do need that level of experience. And I think that's where a Virat Kohli and Rohit can be very, very handy. Ashwin can be handy. But yes, I think the majority of a T20 squad, especially in a World Cup year, should be younger than 30. They should be 25 to 27. Because अगर आप 21-22 के हो तो आपके पास खुद वो अनुभव नहीं है. You may be as good as a Gaikwad, as good as a Umran Malik, as good as a Devdutt Padikkal. I'm sorry, I forgot the name there. But there's still someone lacking, in big match experience. A time will come. I think the punt age, 25, 26, is the right age. You've got players like Hardik Pandya, KL Rao. These guys are all, they're in the prime of their sporting career. So I would like to see these kind of players go anymore. Sir, are you from Delhi? No, I'm not from Delhi. I'm from Mussoorie. I grew up in Mussoorie. I have a house in Bombay. But since 2011, I've been staying in Delhi NCR region. But I'm not from here, no. Replacement Shami were easy automatic choice. No, Shami is not an automatic choice. अगर Shami automatic choice होते तो पिछले 11 महीने से वो टीम से बाहर क्यों होते? उन्होंने अपने करियर में कुछ 60 के आसपास टेस्ट मैच खेले हैं, शायद 80-90 के आसपास वनडे, सिर्फ 19 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं 9 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में. इससे बड़ा क्या सबूत दूं मैं आपको कि टीम खुद इन्हें T20 बॉलर नहीं मानती. तो 19 मैच 9 साल में. He's not a natural T20 bowler. Look at his economy rate, 9.54. Not a natural T20 bowler, but he's got experience and his kind of bowling does suit Australian pitches. Shikhar Singh, Akshar at 7 and Deepak at 8, that would give a lot of depth. It does give depth, but you want Akshar at number 7? I think Akshar is more on number 9. I think Chahar is more on number 10. If you're getting Akshar at number 7, that means that your batting is very weak. That means Karthik's batting at 6. Not good enough. So both, which one spinner you pick versus Pakistan? Ashwin, Ashwin, hands down. विवेक दांगी कह रहे हैं दीपक चाहर. बिल्कुल 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 सही दोस्तों. 23 मिनट होने वाले हैं इस लाइव को. मैं 30 मिनट के मार्क में मैं बंद करूंगा क्योंकि 4 बजे मुझे एक और काम देखना है and I have still not got that call from that source. But thank you आप सभी व्यूअर्स को जो यहाँ पे जुड़े मेरे साथ इस लाइव पे. कुछ और सवाल करने हैं तो आप कर सकते हैं. नवजोत सिंह पूछ रहे हैं रोहित को ऑफ टाइम में टॉस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए. ऑल्सो फॉर राहुल. बिल्कुल टॉस की प्रैक्टिस. आजकल तो मैच टॉस पे ही तय होता है दोस्तों. Ankur San Gupta, I disagree with Manoj. Surya got his debut at 30. He's 32 now. Look at him at the moment. Bilkul, Surya is like, Michael Hussey for me. Got his chance after 30. But the hard work, the development that man put into his game, I think it's remarkable. और शायद हमारे भारतीय क्रिकेट में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो इतनी शिद्दत से ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपनी गेम पे उन्होंने काम किया. Which is now giving them that confidence to start the innings with this shot, with that shot. No player walks out and does that. Surya is a very rare player who got his chance, as you rightly said, Ankur, at 30. Shikir, was Jadeja a bigger loss than Bumrah? I would say no, not right now, because जडेजा की bowling इतनी अच्छी नहीं है. जो हम सब जानते हैं वो bowling कर सकते हैं. Look at the numbers. He had a terrible IPL. He's not been that good in white ball cricket, one day T20s. His batting is very valuable, but his bowling, Akshar is in bowling far, far, far better than Jadeja.
So I think right now, Bumrah is a bigger loss because he's the leader of our attack and he's proven himself. I think Jadeja जो कर रहे हैं अक्षर कर सकते हैं इस साल बॉलिंग और फील्डिंग में जरूर जडेजा की बैटिंग बहुत 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 मिस करेगी ये टीम बट राइट नाउ आई वुड स्टिल से इट्स नॉट एज बिग एज बुमराह Mukul Basaya, who will be a good option? A good option for sorry, I've lost this the stream of what you were asking about. अभिषेक सिंह सिर्फ एक ही आउट एंड आउट फास्ट बॉल था वो भी गया शायद राम भरोसे होगी बॉलिंग एक पॉइंट खेलना है तो रैंडम उमरान को लेके जाओ बात सही है रैंडम पिक है ये क्योंकि इतना वो इतना नहीं कर पाए बट एक आईपीएल के बेसिस पे उनकी पेस उनकी गति उनकी उछाल देख के आप कह सकते हैं कि हाँ वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे कामयाब हो सकते हैं सफल हो सकते हैं बट he does not have enough experience, unfortunately. I think if the team viewed him as a viable strike force in Australia, he would have been in the reserve. But they've gone for experience. They've gone for proven pedigree, which is why Chahar reserves mein hai, which is why Shami reserves pe hai. Bharat Kotwani now our bowling will be under more pressure, but India done very well without him in T20 as well. Without Bumrah, they've done well, but you've been playing bilaterals. Bilaterals में तो भाई हम बॉस हैं टूर्नामेंट में क्या होता है टीम की हाल वो हम सब जानते हैं टूर्नामेंट में अव्वल और बायलैटरल्स में बॉस तो बहुत बहुत वीकनेस है इस टीम में व्हेन इट कम्स टू टूर्नामेंट्स दे आर नॉट अ टूर्नामेंट टीम राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली मुकुल आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर बुमराह चाहर ही इज राइट देयर पिक चाहर Subodh, Arshdeep Singh is all phase bowler. I was surprised when he gone for runs in 19 over yesterday, but that's one over he's gone. Look how well he is the most successful bowler at the death this year, and his economy is 6.7 at the death. बाकी bowlers के 9, 10, 11, 12, 13, 14 हैं तो एक ओवर में रन पिटे look how well he bowled in the Asia Cup he had to defend 6 runs and 7 runs and he almost did it so I have no issues with him every bowler goes for runs when Bumrah can go for 50 in one spell what is this guy going for runs in one over Arshdeep is the first bowler on the team sheet आजकल Karthik Baba, hello Karthik Baba. Does playing Bhuvi and Chahar together make sense? Logically no, because they're both the same kind of bowlers. But if the conditions are going to favor you, why not play them both? I think had Bumrah had this setback not be एक मिनट भैया मैं live पे हूँ hold करो. So if this problem had not gone on, then you would have seen Bumrah and Bumrah, Bhuvneshwar, and Arshdeep who would have been your top three bowlers. But now if there's no Bumrah, जिसे लग रहा है कि वो नहीं है, तो बिल्कुल आपको फिर दीपक चहर को खिलाना पड़ेगा बेशक आप बुमराह के साथ ही खिलाओ अभिषेक सिंह पूछ रहे हैं all of a sudden when our even B team could place bowlers our main bowler now appears to be young Arshdeep who debuted well he's been around for most of the year I think he's played 13-14 matches he's definitely a pick here left arm है बढ़िया death bowler है he's the first bowler on the team sheet right now Subodh Chavan ICC should announce Surya as number one T20 batsman till the return शुभ शुभ बोलो let's not jinx him right now आकाश सोनी पूछ रहे हैं सर आपका फेवरेट बॉलर फेवरेट बैट्समैन कौन है पूरे वर्ल्ड में फेवरेट तो फिर भी आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर विराट कोहली आई बीन वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ विराट कोहली बट आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिम और बॉलर की बात करें आजकल तो आई लाइक जेम्स एंडरसन आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर जेम्स एंडरसन और मे बी बुमराह व्हेन बुमराह ऑन हिज डे आई लव टू वॉच बुमराह चलिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं इस लाइव को खत्म करने में बाकी भी आगे बाहर भी कुछ काम पेंडिंग है घर पे मुझे उसको जाके देखना है आखिरी सवाल लूंगा मैं भरत कोटवानी क्या मोहसिन को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है शायद 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 बट आई डोंट थिंक आई थिंक उनसे आगे तो फिर आपके आवेश खान आएंगे आपके आपके उमरान मलिक आएंगे उनसे आगे कुछ बॉलर्स हैं एनीवेज आई हैव टू रैप अप नाउ दिस इज द लाइव स्ट्रीम वेयर यू फर्स्ट हर्ड बिफोर एनीबॉडी एल्स कि आई हैव स्पोकन टू समवन हु इज विद बुमराह एट द एनसीए खबर अब तक नहीं आई शायद कुछ मामला और भी गंभीर है जैसे ही आएगा मैं आपको आप लोग को बता दूंगा इस चैनल द्वारा शुक्रिया मेरे साथ पिछले 28 मिनट से यहाँ पे जुड़ने के लिए आपके सवाल आई होप मैं सबके सवाल का जवाब दे सका प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए बताइए अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को बाकी क्रिकेट प्रेमियों को इस चैनल के बाद मैं हर दिन मेरी कोशिश रहती है हर दिन आपके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँ यहाँ पे आज मैं लाइव आया था क्योंकि मेरे पास हॉट ताज़ा खबर थी बुमराह को लेकर तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया मुझे इस चैनल पे पिछले 2 साल से थैंक यू enjoy your day and let's hope that the news about Bumrah is not that serious. Thank you all. Like my channel, share, subscribe. Love you all. I'll see you again very, very soon. Goodbye for now.